आज का जो मेरा टॉपिक है वो है साइंस इन द स्कूल कैरिकुलम। साइंस का स्कूल के निसाब में पढ़ाया जाना। एजुकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटीज प्लान देयर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए मुआशरे जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से मनसूबाबंदी करते हैं। इट इज़ द मोस्ट cogent instrument in the progress of any nation। किसी भी कौम की तरक्की के लिए इसका बहुत ही अहम किरदार है। Hence the quality of education has to be improved for faster। इसलिए जो म्यार तालीम है किसी भी कौम का उसे बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें बेहतरी लानी चाहिए। wholesome development ऑफ द लर्नर्स, ताकि जो है सीखने वालों की, पढ़ने वालों की जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, वो मुकम्मल तौर पे हो सके। इट इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, ये पूरी दुनिया में माना जाता है डैट एनी अटेम्प्ट एट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कोई भी आप कोशिश करते हैं म्यार तालीम को बेहतर बनाने की, अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ टीचिंग। उसका इन्हसार किस चीज़ पे होता है? म्यार तालीम पे होता है, उसका क्वालिटी ऑफ टीचिंग पे होता है, जो आप पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने वालों के क्वालिटी पे होता है। एंड लर्निंग इन द क्लासरूम, और क्लासरूम के अंदर जो लर्निंग हो रही होती है उस पर डिपेंड करता है। एंड लेबॉर्ट्रीज, और लेबॉर्ट्रीज के अंदर। अब कैरिकुलम क्या है? कैरिकुलम इज ए प्लान फॉर लर्निंग। कैरिकुलम की डेफिनेशन की गई है, ये एक मनसूबाबंदी है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। एज टाबा 1962 सेज, ये डेफिनेशन किसकी है? टाबा की, जिन्होंने 1962 के अंदर कहा था कि कैरिकुलम जो है वो एक प्लान है, मनसूबाबंदी है सीखने के लिए, लर्निंग के हवाले से। लाइक एवरी कैरिकुलम, किसी भी कैरिकुलम की तरह साइंस कैरिकुलम हैज़ इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव, साइंस के निसाब के भी अपने मकासद हैं। विच शुड बी फुलफिल्ड, जिन्हें मुकम्मल करना चाहिए। व्हेन द लर्नर पास थ्रू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जब लर्नर्स जो हैं वो गुजरते हैं सीखने के तजर्बात में से। इन पाकिस्तान में एट एलिमेंट्री लेवल में इंटीग्रेटेड साइंस कैरिकुलम इज डेवलप्ड, एक इंटीग्रेटेड कैरिकुलम जो है डेवलप किया गया है, कंसिस्टिंग ऑफ, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पे मुश्तमिल है। यानी कि ये 6ठी, 7वीं और 8वीं की बात हो रही है। इसमें इंटीग्रेटेड है, यानी कि मिला के एक सिलेबस बना हुआ है, जिसमें कुछ चैप्टर जो हैं वो फिजिक्स के होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के, कुछ बायोलॉजी के और कुछ एस्ट्रोनॉमी के। The courses in integrated science are being developed। ये जो integrated science के courses हैं, निसाब है, इसको डेवलप किया जा रहा है कैरिकुलम 2006 के मुताबिक इन such a way, इस तरीके से, so as to integrate science with the learner environment। साइंस को जो है वो लर्नर, सीखने वालों के माहौल। एवरी कैरिकुलम हैज़ एट लीस्ट 4 एलिमेंट्स। तमाम कैरिकुलम के तमाम निसाबों के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 अनासर होते हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, मकासद, कंटेंट, मेथडोलॉजी एंड एवेलुएशन। The major purpose of science at elementary level is to enable students to grasp the basic knowledge of science needed for further study of modern science and to understand its applications। Science education is the field concerned with sharing science content and process with individuals not traditionally considered part of the scientific community। The learners में भी, जो सीखने वाले हैं वो चिल्ड्रन, बच्चे भी हो सकते हैं, कॉलेज के तलबा भी हो सकते हैं, और अडल्ट बालिग भी हो सकते हैं, नौजवान भी हो सकते हैं। विद इन द जनरल पब्लिक, जनरल आम आवाम में से। The field of science education includes work in science content। जो शुबा है साइंस की तालीम का, उसमें जो वर्क शामिल है, साइंस कंटेंट है, उसमें साइंस का मवाद है, एंड साइंस प्रोसेस, और साइंस का तरीकाकार है।
4 एलिमेंट्स जो हैं हर करिकुलम के होते हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्टिव, मकासद, कंटेंट, मवाद, मेथडोलॉजी, तरीकाकार पढ़ाने का, एवेलुएट करना, टेस्ट लेना। द मेजर पर्पज ऑफ द साइंस एट एलिमेंट्री लेवल पे जो साइंस का बुनियादी मकसद है इज टू इनेबल स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना टू ग्रैस्प द बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस, के वो साइंस का जो बुनियादी नॉलेज है उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकें। नीडेड फॉर द फर्दर स्टडी, जिसको फर्दर स्टडी के लिए जिसकी ज़रूरत होती है ऑफ मॉडर्न साइंस की, एंड टू अंडरस्टैंड इट्स एप्लीकेशंस, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनका समझना। साइंस एजुकेशन इज़ द फील्ड कंसर्न्ड, साइंस एजुकेशन जो है वो फील्ड कंसर्न्ड है विद शेयरिंग साइंस कंटेंट, जिसमें साइंस का मवाद जो है, कंटेंट जो है वो शेयर किया जाता है। प्रोसेस विद इंडिविजुअल्स, और प्रोसेस तरीकाकार है इंडिविजुअल्स के साथ, नॉट traditionally considered part of scientific community. The standards for science education provide expectations for development of understanding for students through the entire science curriculum. जो स्टैंडर्ड हैं फॉर साइंस एजुकेशन के लिए प्रोवाइड एक्सपेक्टेशंस, ये तवक्कुआत जो है वो मुहैया करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ बूझ जो है उसको बढ़ाता है। थ्रू द इंटायर साइंस करिकुलम, तमाम साइंस करिकुलम के हवाले से। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड और फिजिकल साइंस, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड जो के म्यार में शामिल किए गए हैं, और फिजिकल साइंस वो फिजिकल साइंस के होते हैं। साइंस एजुकेशन इज कोर एरिया ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, साइंस एजुकेशन जो है ये हमारा कोर एरिया है, बुनियादी तरीकाकार है, बुनियादी शुबा है ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी तालीम के निज़ाम का। एंड साइंस इज़ एसेंशियल, और साइंस जो है वो लाजमी है, एंड फंडामेंटल सब्जेक्ट इन आवर करिकुलम, हमारे निज़ाम में ये बुनियादी और लाजमी सब्जेक्ट है। साइंस एजुकेशन प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिटिकली, साइंस की जो तालीम है वो हमें मौका फराहम करती है कि हम क्रिटिकली सोच सकें। एंड यूनिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैंस नेचुरल इन्वायरमेंट एंड apply these concept to control of the environment for man's benefits, और ये जो concepts साइंस से हासिल होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है अपने ही माहौल के अंदर, अपने इर्द गिर्द अप्लाई करते हैं इंसान के मुनाफे के लिए, बेनिफिट के लिए। फर्दर मोर मजीद it is a human expertise which require man best effort to sustain it at optimum level of productivity. Need of science in elementary school curriculum, साइंस की क्या ज़रूरत है एलिमेंट्री स्कूल कैरिकुलम में। साइंस is in the school curriculum has been the subject of much attention, साइंस जो है स्कूल कैरिकुलम में हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच अटेंशन, जिसमें साइंस की जो है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन की तवज्जो की ज़रूरत होती है। इन दी 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, अराउंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में। एंड नाउ इट इज़ एन इमर्जिंग ट्रेंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये एक उभरता हुआ रुझान है तरक्की पजीर ममालिक में, लाइक आवर्स, हमारे जैसे मुल्कों में। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, बहुत सारे तरक्की पजीर ममालिक में, तरक्की करते हुए ममालिक में, लाइक पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान है, वी हैव विटनेस्ड ए स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स, हम जो है लगातार साइंस के ग्रेजुएट्स जो हैं उसमें इजाफा देख रहे हैं। एंड रिसर्चर्स डीलिंग विद द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ साइंस, और जो मौखिक हैं जिनका ताल्लुक साइंस सीखने और पढ़ाने के हवाले से है, वो भी बढ़ रहे हैं हमारे पास। एट द सेकेंडरी लेवल पे क्या है, साइंस एजुकेशन प्रोवाइड द स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी टू थिंक क्रिटिकली, साइंस एजुकेशन जो है वो मुहैया की जाती है तलबा को कि वो क्रिटिकली सोच सकें। प्रैक्टिस डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, मुख्तलिफ टीचिंग मेथड्स जो हैं वो
अमल में लाए जाते हैं, डेवलप साइंटिफिक कंसेप्ट और साइंटिफिक कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, विच फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, जो कि हमारे तबाही माहौल को समझने में मदद देते हैं। साइंस आल्सो डेवलप्स एटीट्यूड, साइंस जो है वो एटीट्यूड डेवलप करती है, which is useful in a sense that it gives people a simplified and practical guide for appropriate behavior. Positive attitude towards learning, subject area and teaching method all important because they affect students' motivation to learn and continuing motivation not only to apply and utilize what has been learned but also to seek our further related opportunities. The main purpose of teaching science and in secondary school is to enable students to grasp systematically the basic knowledge of physical sciences needed for further study of modern science and technology and to understand its applications. It should help them to acquire experimental skills, develop the ability to think and to use mathematics, statistics to solve the physical problems. In teaching and learning साइंस एट स्कूल लेवल, सीखने और सिखाने, साइंस के सीखने और सिखाने स्कूल के सतह पर स्टूडेंट फेस मैनी प्रॉब्लम, स्टूडेंट को बहुत सारी मुश्किलात का मसाइल का सामना करना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, साइंसी जो कंसेप्ट हैं और थ्योरीज और कवानीन जो हैं उनको समझने के लिए। इन क्लासरूम, इन द साइंस क्लासरूम, साइंस के क्लास में, लेबॉर्ट्रीज के अंदर, इन दी ओपिनियन ऑफ वुड के ओपिनियन के मुताबिक 1991 साइंस एजुकेशन शुड बी मोर अबाउट द लर्निंग ऑफ scientific process than the learning of scientific facts. Present age is the known as the age of science, and so science is considered an important subject in the science curriculum. Science education enables the students to identify and solve scientific problems and to do research in new areas of knowledge. In this era of science के इस दौर में large number of people are being employed in scientific pursuits and for this they need knowledge of science. उन्हें साइंस के इल्म की ज़रूरत होती है. The dawn of space age and explosion in knowledge have also necessitated that the teaching of science to every student. Science is the essential for understanding the world. साइंस जो है वो दुनिया को समझने के लिए ज़रूरी है थ्रू नॉलेज ऑफ लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फितरत के कवानीन का इल्म होने के ज़रिए. It also provide man with a tool for organizing his thinking. ये मज़ीद मुहैया करती है इंसान को विद द टूल, एक आला फॉर ऑर्गेनाइजिंग हिज थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को जो है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड फॉर क्लासिफाइंग हिज एक्सपीरियंस, और तजर्बे को क्लासिफाई करने के लिए. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन कैन मेक ए decisive contribution to improving our standard of living and to impart the basic scientific and technological knowledge necessary for the younger generation to carry out an increasing number of occupations, especially in productive sector. The teaching of science and technology education is also a powerful means for stimulating creativity among young people. In the view of SAFTR 2010, the most significant aspect of modern science is the impact it had in solving a variety of problems of practical and technological importance, as well as those related to pressing problems of mankind. A large number of these problems require a proper understanding and applications of scientific principles and processes. Mentioning the importance of science education to meet the needs of food, power, transportation, communication, the continuous scientific research is needed to explore and discover new sources of power, food, communication,